Hello student, I am Ashish Chawla and today we discuss about the Pythagoras theorem. Now according to the Pythagoras theorem, in a right angled triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. So this is a statement of a Pythagoras theorem, that is, in a right angle triangle the squares of the hypotenuse is equals to the sum of the squares of the other two sides. It means अगर हमारे पास एक right angle triangle है, let's say this is a right angle triangle, this is A, this is B, and this is C, and this is the right angle, and the side opposite to the right angle is known as hypotenuse. According to Pythagoras theorem, this hypotenuse square, that is AC square, is equals to the sum of the squares of the other two sides. Other two sides मतलब AB and BC, इनके squares का. So that is a Pythagoras theorem. Now we see the proof of it. How we can prove this result, that is AC square is equals to AB square plus BC square. So what we have given? We have given a right angle triangle. Let's say ABC, whose angle B is, let's say, 90 degree. So what we have to prove, that let's say this is a right angle triangle. What we have to prove, that AC square is equals to AB square plus BC square. तो इसको प्रूव करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. And what is the construction? We have to draw a perpendicular from vertex B to the side AC. We have to draw a perpendicular from vertex B to the side AC. Let's say this point is D. What we have to do? We have to draw BD perpendicular to AC. ये हमने draw कर दिया. Now let's see the proof of it. अगर मैं ट्राइंगल ABC की बात करूं तो एंगल B इसका 90 डिग्री है, तो बचे हुए दो एंगल्स, दैट इज A एंड C, इनका सम कितना होगा? 90 होगा, बिकॉज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. सो अगर एंगल B 90 डिग्री है, तो लेट्स से अगर मैं एंगल C को अगर मैं थीटा अज्यूम करूं, तो क्योंकि A और C का सम 90 है, तो अगर एंगल C थीटा है तो एंगल A कितना हो जाएगा? दैट इज 90 माइनस थीटा. ठीक है. नाउ अगर मैं ट्राइंगल ए बी डी की बात करूं तो इसमें एंगल D 90 डिग्री है. ओके. सो अगर मैं ट्राइंगल ए बी डी की बात करूं तो उसमें मैं बोलूंगा एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए बी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो एंगल बी ए डी हमें दे रखा है, दैट इज 90 माइनस थीटा. एंगल ADB हमें दे रखा है 90. एंगल ABD हमें निकालना है, that should be equals to 180. So 90 plus 90, that is 180. 180 and 180 are get cancel. This 90 and 180 are get cancel. So angle ABD equals to theta. तो एंगल ABD कितना हो जाएगा हमारा? थीटा. So this should be theta. Now फिगर से हमें पता चल रहा है कि जो एंगल ABC है वो पूरा 90 डिग्री है. उस 90 में से ये पार्ट थीटा है. दिस पार्ट इज थीटा. सो व्हाट शुड बी दिस पार्ट? सो दिस पार्ट शुड बी 90 माइनस थीटा. क्लियर? नाउ वी कंसिडर द ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB. अगर इन दो ट्राइंगल्स को हम देखें, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADB, so what we have to find that कि दोनों का एंगल A सेम है, that is in triangle ABC angle BAC is same as DAB, both are equals to 90 minus theta. In the same way triangle ABC में एंगल B that is 90 degree, तो triangle ADB में एंगल D 90 degree है, that is ADB, both are equals to 90 degree. So by angle criteria
these two triangles, that is ABC and ADB, are similar. और अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, दैट इज AB बाय AD is equals to BC by DB is equals to AC upon AB. Now अगर मैं फर्स्ट एंड लास्ट इक्वेशन को इक्वेट करूं, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो मैं बोल सकता हूं AB upon AD is equals to AC upon AB. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, so we are getting AB into AB, that is AB square, or AD into AC. So this is our first result, that is AB square is equals to AD into AC. Now in the same way we prove that the triangle ABC and triangle BDC, अगर इन दो ट्राइंगल्स को देखें तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों में एंगल C कॉमन है, दैट इज ट्राइंगल ABC का एंगल ACB एंड ट्राइंगल BDC का एंगल BCD, बोथ आर इक्वल्स टू थीटा. एंड हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं ट्राइंगल ABC में एंगल B 90 डिग्री है और ट्राइंगल BDC में एंगल D 90 डिग्री है, बोथ आर इक्वल्स टू 90 डिग्री. So again by angle criteria, triangle ABC is similar to triangle BDC. So these two triangles are similar, and we know that if the triangle are similar, then the ratio of their corresponding sides are equal. So we can say that AB upon BD is equals to BC upon DC is equals to AC upon BC. Now if I compare the last two statements, I can say that BC square is equals to AC into DC. ये हम बोल सकते हैं. That is our second result. So this is our first result. This is our second result. अगर मैं इन दोनों results को add कर दूं, now I am adding these two results, first plus second. So AB square plus BC square is equals to AD into AC plus AC into DC. I take AC common, so what is left in the bracket, that is AD plus DC. And if we see the figure, what is AD plus DC? See here, so AD plus DC becomes AC. So हम AD plus DC की जगह क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं यहाँ. So AC into AC means AC. So this is our result. So according to the Pythagoras theorem, the hypotenuse square is equals to the sum of the squares of the other two sides. Now we see the converse of the Pythagoras theorem. Converse of Pythagoras theorem. In converse of Pythagoras theorem, first we see the statement of the converse of Pythagoras theorem. That is, in a triangle, the square of one side is equal to the sum of sum of the square of other two sides, then the angle opposite to the first side is right angle. So this is a statement. अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें एक साइड का स्क्वायर बाकी दो रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के बराबर है, स्क्वायर के सम के बराबर है, तो जो पहली साइड है उसके अपोजिट जो एंगल होगा that should be 90 degree. So let's see what we have given and what we have to prove. What we have given, let's say we have a triangle ABC. In this triangle ABC we have given that, let's say AC square is equals to AB square plus BC square, that we have to given. Now what we have to prove, that the angle opposite to this side, that is AC, के opposite कौन सा angle है, that is B, that should be 90 degree. That we have to prove. So in order to prove this result, we have to do one construction. So in this construction we have to construct a triangle PQR. We have to construct triangle PQR such that
such that the length of QR is equals to BC, QR is equals to BC, and angle Q is 90 degree. This should be 90 degree, and PQ must be equals to AB. PQ की लेंथ किसके बराबर हो? AB के बराबर हो. So this is our triangle joint PR simply. तो हमें एक ट्राइंगल PQR कंस्ट्रक्ट करना है इस तरह से कि एंगल Q तो 90 डिग्री हो और QR किसके बराबर हो? BC के, और PQ किसके बराबर हो? AB के. तो इस तरह से हमें कंस्ट्रक्शन करना है. Now let's see the proof of it. Now, as the triangle PQR is right angle triangle, so in triangle PQR, by Pythagoras theorem, we can use the Pythagoras theorem because it is a right angle triangle. So we can say that PR square is equals to PQ square plus QR square. Now, as we construct PQ equals to AB, so in place of PQ I can write AB, or in place of QR I can write BC. Why so? Because PQ equals to AB and QR equals to BC through construction. So, and AB square plus BC square, it is given to you that AB square plus BC square is equals to AC square. It is given to us. So in place of AB square plus BC square I write simply AC square, because it is also given to you that is AB square plus BC square is equals to AC square. That is given to us. So from here PR square is equals to AC square. So we can say that PR equals to AC. PR equals to AC. So if we consider triangle ABC and triangle PQR, so what we observe that AB is equals to PQ through construction, BC equals to QR through construction, and AC equals to PR, that we have already proved. So by triple S criteria, these two triangles are congruent. By triple S criteria, these two triangles are congruent. अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे. सो वी कैन से दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू. एंगल बी, और जैसा कि हमें क्यू 90 डिग्री दे रखा है तो हम क्यू को 90 डिग्री लिख देंगे. सो एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था. सो मीन्स प्रूव्ड. नाउ वी सी सम रिजल्ट बेस्ड ऑन Pythagoras theorem. Now the first result first, that is in given figure angle B is acute. The given figure angle B is acute and AD is perpendicular to BC, then AC square is equals to AB square plus BC square minus 2 times BD into BC. That we have to. This is the result, that is अगर ABC एक ट्राइंगल है जिसका एंगल B एक्यूट है, तो इस एक्यूट एंगल के जो अपोजिट साइड है दैट इज AC, उसका स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 times BD into BC. So let's see how we can prove this result, proof of this result. Now in triangle ADC we apply the Pythagoras theorem. So we can say that AC square is equals to AD square plus DC square. Okay, Pythagoras theorem. Now in place of DC I can write BC minus BD. DC स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, BC में से BD माइनस कर दिया तो व्हाट लेफ्ट, दैट इज DD, सॉरी DC. So I write DC as BC minus BD. So AD square. Now simply apply the formula of A minus B the whole square, that is A square plus B square minus 2. In triangle ABD we have AD square plus BD square is equals to AB square. ये हम लिख सकते हैं. In triangle ABD AD square plus BD square को हम क्या लिख सकते हैं, AB square. So AD square plus BD square को हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे किससे, AB square से. BC square as it is minus twice BC into BD. So this is our result. AC square is equals to AB square plus BC square minus 2 times BC into BD. That we have to prove.
Okay, now see the second result. Let's see. Now in the given figure, angle B is obtuse and AD is perpendicular to BC when produced. AD is perpendicular to BC when produced. Now then AC square is equals to AB square plus BC square plus twice BD into BC. So that is the result we have to prove. So let's see how we can prove this result. Now we consider triangle ADC and we apply Pythagoras theorem. So AC square is equals to AD square plus DC square. AD square, in place of DC I can write DB प्लस BC. हम DC को क्या लिख सकते हैं? DB प्लस BC. नाउ AD स्क्वायर, नाउ यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे A प्लस B का होल स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB. क्लियर? नाउ अगेन AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? AB स्क्वायर से. सो AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर इज नथिंग बट AB स्क्वायर. BC स्क्वायर को BC स्क्वायर रहने देंगे, twice BD into BC. So this is our result. So AC square is equals to AB square plus BC square plus twice BD into BC. So that we have to prove. This is our. So this is for today. In the next class, we discuss the problem based on Pythagoras theorem and its converse. Thank you.